Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Nita Gaura Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol, Nita Gaura Hari Bol. Nita Gaura Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol, Nita Gaura Bol. Nita Gaura Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol, Nita Gaura Hari Bol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Bolo Hare Hare, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bolo Hare Hare, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol, Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol, Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol, Jai Gaura Hari Bol. Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol, Jai Gaura Hari Bol. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namini. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Bhaskadya Nisadarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda.
Nityananda, Advaita Gadadhar, Jaya Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Sivasadi Gaur Bhaktavinda. Nityananda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bolo, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Bolo, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Shabbat, Paramahamsa, Pararajagacha, Statara Satarashi, Shishimar, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Goswami Maharaj, Srila Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Acharya Srila Haridas Thakur ki jai, Prem Sikaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Shri Radha Krishna Gopinath Sam Kunda Radha Kunda Giri Bhudan ki jai, Shri Vrindavan Dham ki jai, Shri Mayapura Dham ki jai, Shri Ganapuri Dham ki jai, Tulasi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Ganga Maya ki jai, Jamuna Maya ki jai, Samaveda Bhakta Vrinda ki jai, Jai Gaura Premanandi, Hariram Sankirtan ki jai, Srila Prabhupada Book Distribution ki jai, Gaura Premanandi, Hariram. All glories to the assembled divine. All glories to the assembled divine. All glories to the assembled divine. All glories to His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Gaura Premanandi, Hare Rama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Jinamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Vaskatya Desatarine. What do you want to do? I'll say a few words. Yeah. I may have to translate it. That's fine. So, how would you want me to do? Sentence. If you would be speaking a sentence, I translate it. Yeah, that's fine. Okay. This is a little warm. No, I'm okay. So please accept my humble obeisances. महाराज कह रहे हैं कि उनका आप दंडवत प्रणाम सिखाए तो कौन से दे रही है हरि बोल You need a microphone. यस In the age of Kali Yuga, there are so many bad things. कलयुग में बहुत ही खतरनाक हमें अनुभव होते हैं But there's some good things also. लेकिन कलयुग में बहुत अच्छे भी हमें अनुभूति प्राप्त हो सकती है Kaliya dosanide rajan astihi eka mahadguna kirtanadeva krishnasya mukta sangasya jayate
Simply by chanting Hare Krishna sincerely and not committing any offenses against the holy name, you can go back to Godhead very easily. श्लोक में समझाया गया है कि मात्र हरे कृष्ण महामंत्र का प्रामाणिकता से जप करने से हम सारे समस्याओं से बाहर निकलकर भगवत धाम जा सकते हैं. Because this age is so difficult to be Krishna conscious, Chaitanya Mahaprabhu purposely gave a very simple way that anyone, whether they're educated or not educated, they're literate or illiterate, they can go back to Godhead. क्योंकि बहुत कठिन है इस कलयुग में कृष्ण भावना में आना, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही आसान एक तरीका दिया हुआ है. चाहे आप शिक्षित हो या अशिक्षित हो, चाहे आप गुण हो या ना हो, लेकिन आप अपने जीवन को परिपूर्ण कर सकते हैं. In previous ages, if you thought of doing something evil, immediately you would get the karmic result. You didn't even have to do the evil act. Simply thinking about the evil act, you would get the karmic result. पूर्व के युगों में मात्र अगर आपके मन में किसी प्रकार का पाप भरा जाता है, उसका तुरंत आपको फल भुगतना पड़ता है. आपको करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती. But in this age of Kali Yuga, if you think of doing something evil, you do not get the karmic result. You have to actually do it to get the karmic result. परंतु कलयुग में आपके विचार करने से आपको फल नहीं दिया जाता. आपको कर्म करने पड़ते हैं, तभी आपको फल प्राप्त होते हैं. And in previous ages, if you thought of doing something good, you had to do it in order to get the positive karmic result. पिछले पूर्व के युगों में अगर आपको अच्छा कर्म फल चाहिए, तो मात्र विचार करके नहीं चलेगा, आपको कर्म करना पड़ेगा. But in this age, simply thinking of doing something good, in other words, serving the Lord in some way or other, you get the result, even if you don't do it. लेकिन कलयुग में अगर आप खाली विचार करते हो और आप कर भी नहीं पाते कर्म, फिर भी विचार करने का आपको सब पर अच्छा फल प्राप्त होता है. So there are some very good things तो कलयुग में कुछ अच्छी भी बातें in हैं. Kali Yuga. The technical name is dispensation. In other words, look, because of Lord Chaitanya's extreme mercy, he made certain things easy so that we can go back to Godhead. क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बहुत दयालु हैं, तो उन्होंने मार्ग बहुत ही आसान कर दिया ताकि हम भगवत धाम जा सकें. Also, in this age, if you engage in devotional service, Nahabhikamanastasti pratijayana vidyate swapam apyasya dharmasya chayati bhavato mayat. Simply engaging in devotional service, that devotional service asset will stay with you eternally. मात्र भक्ति की किसी भी प्रणाली में अगर आप लगे जाते हैं, तो उसका फल आपको नित्य रूप से प्राप्त होता है, हमेशा आपके साथ रहेगा. So if you do 1% in this age and you die, when you take birth again, hopefully in a human form, you start from 2%. तो अगर आप इस जीवन में 1% वृद्धि कर पाते हो और फिर आपकी मृत्यु अगर हो जाती है, तो अगले जीवन में आपको 2% से शुरुआत करनी है. Then also, if you come to class every day and hear Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam spoken by genuine devotees, one by one, all your previous karma is eradicated. और साथ ही साथ अगर आप श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम के कथाओं में क्लास में आते हो, तो मात्र श्रवण करने से एक एक करके आपके सारे पाप कर्म धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं. So, therefore, when you get initiated, your karma is not exactly eradicated, it's put on hold. Now, because you can't engage in devotional service unless you're free of karma. दीक्षा के समय आपके पाप कर्म फलों से आपकी मुक्ति नहीं होती, सिर्फ पाप कर्म फल को रोक के रखा जाता है, क्योंकि बिना रोके हुए आप अच्छी सेवा नहीं कर पाओगे. And if you fall down, it comes back again. और अगर आपने फिर अपने वचनों को तोड़ दिया है, तो वो पाप कर्म फल जो रुके हुए थे, अब पुनः आपके ऊपर लग जाएंगे. But if you
regularly come to class and you hear reverently, with great attention, one by one, all those pops and all those negative things, they go away, they're eliminated. इसलिए अगर आप नित्य रूप से आकर श्रवण करके कथा में आकर क्लास में आकर तो निश्चित रूप से एक एक करके वो पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं. Because this movement is based on Shravanam Kirtanam. ये जो हमारी संस्था है ये श्रवण कीर्तन पर अवलंबित है. Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam. So if you hear regularly and repeat, then you can also remember. Simply reading is not good enough because most people, when they read something, they don't really remember it very well. अगर आप श्रवण करते हो और फिर कीर्ति करते हो उसका तो फिर स्मरण करना के लिए आसान हो जाता है, किंतु आप सिर्फ अध्ययन कर रहे हो तो बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है कि वो स्मरण कर सकें. But when you hear genuine devotees speak the Shruti, the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, you have a chance to ask questions, and because of their explanations, you're more able to remember. अगर आपको अवसर मिलता है कि आप सत भक्तों के मुख से कथा श्रवण कर सके, श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम के आधार पर कथा आधारित कथा, तो आपको मौका मिलता है कि आप ऐसे भक्तों से अपनी शंका पूछ सके और शंका निवारण हो सके. There was one Baniya, and he would take his son to hear Sunday pravachan in temple. एक बनिया थे व्यापारी और वो अपने पुत्र को रविवार के सत्संग कार्यक्रम प्रवचन के लिए तैयार करते थे. And then that was on Sunday. And on Monday they would start working again in the shop. रविवार को प्रवचन उपरांत सोमवार से फिर से वो अपने दुकान पर बैठकर व्यापार करते थे. So he had a grain business, selling dal and rice and things like that. तो कड़धान्य या धान्य का उनका व्यापार था. So one Sunday, the Pandit was giving a class, and he explained that it's very important to never refuse cows to eat something. तो एक रविवार को प्रवचन में उन्होंने सुना पंडित जी से, प्रवचनकर्ता से, कि बहुत आवश्यक है कि गाय को हमेशा कुछ न कुछ हमें व्यंजन देना चाहिए, कुछ न कुछ आहार देना चाहिए. So he said, if you ever see a cow come near your house or near your business, then you should feed Gomata, because Krishna himself is a cowherd boy. He loves cows. So if you show that same affection to these cows that are roaming around the town, the Lord will be very pleased with you. तो गाय को कभी भी भोजन देने से हमें कुछ आहार देने से हमें ठुकराना नहीं चाहिए, और अगर आपके व्यापार के आपके घर पर कहीं गाय आ जाए तो कुछ न कुछ उसे खिलाना जरूर चाहिए. So Monday morning they opened the shop, and the boy took out all the grains and cleaned everything, and lo and behold, one cow came. सोमवार को उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया, दुकान खोला, सारा धान्य बाहर रखा और वहाँ पर गाय लगी. So the boy was remembering the class that he attended the day before, and the Pandit said, Krishna is a cowherd boy. You should always give something to the cows. Don't ignore them. So he let the cow eat some of the grains. तो जो पुत्र था उसे रविवार का प्रवचन ध्यान में था कि जहाँ पर उन्होंने सुना था कि कृष्ण जो हैं वो गौपालक हैं और गाय को हमेशा कुछ न कुछ आहार देते रहना चाहिए, तो उन्होंने गाय को धान्य खाने दिया. So his father was on the phone. He was doing business, and he looked out and he saw the boys letting the cow eat the grains. व्यापारी फोन पर बात कर रहे थे और अचानक उनका ध्यान गया, आंख से देखा उन्होंने कि अरे ये तो गाय को खाने दे रहा हमारा धान्य. He came running out and said, "What are you doing? You're not supposed to let the cows eat the grains. We'll go bankrupt." तो भागते हुए बाहर आया, ये क्या कर रहे हो? अगर गाय ऐसे खाएगी तो हम पूरी तरह हमारा दिवाला निकल जाएगा. He said, "Pitaji,
The pundit said yesterday we should always feed the cows. He said, no. You just sit there like this and say yes, but ignore it. Don't listen to what he says. बालक ने कहा पिताजी लेकिन कल तो प्रवचन में कहा था कि गाय को कभी भी हमें ना नहीं कहना चाहिए। तुम पिताजी ने कहा ना सत्संग में खाली हाथ पर हाथ रखकर ऐसे बैठो हाँ करते रहो करना नहीं कुछ। This is going on nowadays. यही चल रहा है सबका व्यवहार। People come, they hear the lecture. It's just a show. It's not real. लोग यहाँ पर आते हैं और प्रवचन सुनने का खाली एक आडंबर खाली रह गया। The new god of India is Rupiah. That's his name, Rupiah. भारत में जो नए भगवान हैं उनका नाम है रुपया। Everyone is going crazy to gain money and spend it and buy things on Amazon. हर व्यक्ति जो है बदला गया है कि वो अमेज़न पे जाकर कुछ खरीदे। One day, I saw an advertisement on television. I was not really interested in it, but it was a chair, and a lady was sitting on this chair, and she had a remote control, and she went zzz, and then her feet came up, and then she went zzz, and her feet went down. ऐसे आते जाते हैं एक बार कहीं पर उनको एक एडवर्टाइजमेंट देख गया टेलीविजन पर कहीं पर स्क्रीन पर एक स्त्री जो है कुर्सी पर बैठी हुई कुर्सी के बारे में था और वो हाथ में बजा रही थी ऐसे करके तो पैर उनका ऊपर चला गया मशीन कुर्सी ऊपर चला गया फिर ऐसे दबाया करके तो नीचे आ गया। So I was giving a class and I mentioned it, I said, this is crazy. That's a nonsense chair. You don't need that. महाराज जी जो है इस पर प्रवचन दे रहे थे बता रहे थे कि ऐसे करते हुए और उन्होंने कहा कि ये पागलपन है आपको इसकी थोड़ी आवश्यकता है। And just like you were laughing, everyone was laughing. And for about 30 seconds, they laughed. But one lady kept laughing. तो जैसे आप यहाँ पर हंस रहे हैं वैसे प्रवचन के समय लोग जो हैं आधा मिनट तक हंसते रहे लेकिन एक महिला थी वो हंसना बंद ही नहीं कर रही थी। So I said, Mrs. Patel, what's so funny? Why are you laughing so much? उन्होंने कहा कि श्रीमती पटेल आप क्यों इतना हंस रही हैं क्या समस्या है? She said, my husband just bought that chair. उन्होंने कहा कि उनकी पति ने अभी वही कुर्सी खरीदी। So this is what's going on today. Because of publicity, people are buying junk products and they're convinced that they need it. ये आजकल चल रहा है कि कितना इश्तिहार दिया जाता है लोग भ्रमित हो जाते हैं और लोग जो है फालतू से फालतू वस्तु खरीदते हैं। But we don't need any of these things. तो हमें इनकी सही में आवश्यकता नहीं है। What we need is Krishna consciousness. हमें कृष्ण भावना की आवश्यकता है। Because Krishna is the Supreme Personality of Godhead. If you serve him nicely, then he'll order the devatas to give you everything you need easily. You don't need factories. You don't need science. This is the real science, the cooperation between yourself to Krishna, and then Krishna orders the demigods to give you whatever you need. भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अगर आप अच्छी से उनकी सेवा करेंगे तो भगवान देवताओं से कहेंगे कि आपकी सारी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी कर दें। तो हमें फैक्ट्री की या साइंस की जहाँ पर कृष्ण को ठुकरा जाए उसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता यह है कि भगवान की सेवा करते हुए भगवान देवताओं को आदेश देते हैं कि सबकी जो भी आवश्यकता है वो पूरी करें। This is explained in Bhagavad Gita, 3rd chapter, 10th, 11th, and 12th verse. भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 10वें, 11वें और 12वें श्लोक ही समझाएंगे। We're not meant to work hard day and night, driving to work, driving back, worrying about this, worrying about that. No. If we learn to grow our own food and we have milk from our own cows, that's
80-90% of life's needs. यह वास्तव में आवश्यक नहीं है कि हम दिन भर खाली काम करते रहें ये सोचकर कि काम बहुत जरूरी है हमारी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए। हमें मात्र सिर्फ अन्न चाहिए, दूध चाहिए। तो अगर हम अपना अन्न उगाते हैं और गौ माता की सेवा करते हैं, उन्हें दूध मिलता है, तो 80 से 90% की हमारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। This is science. This is the science that made India the richest country in the world before India was invaded by the Greeks, and then Muhammad Ghazni, and then the Mughals, and then the British. Why did they come to India? Why didn't they go to Siberia? तो यही वास्तविक विज्ञान है जो भारत में पूर्व काल से, प्राचीन काल से ये विज्ञान का के जानकार होते हुए लोग सुखी जीवन जी रहे थे, जब तक कि यूनानी लोग ना आकर यहाँ पर, जो ग्रीक हैं यूनानी लोग यहाँ पर आकर आक्रमण किया। तत्पश्चात तुरक आए, तत्पश्चात मुगल आए, तत्पश्चात अंग्रेज आए और उन्होंने हमें लूटने का प्रयास किया। Why didn't they go to Siberia? Why did they invade India? वो साइबेरिया क्यों नहीं है, मतलब रेगिस्तान क्यों नहीं है? भारत ही क्यों आए उन्होंने? भारत क्यों आक्रमण किया? क्योंकि भारत पूरी तरह से समृद्ध देश है। Because India was the richest country in the world. उस समय भारत विश्व का सबसे समर्थ देश था। They were exporting things 2,500, 3,000 years ago to Europe and all over the world. आज से 2,500 से 3,000 वर्ष पूर्व से भारत जो है, उसके पहले भी भारत जो है अन्य लोगों को के साथ व्यापार करते हुए उन्हें एक्सपोर्ट कर रहा था। Just like Aurangabad. No, we don't want to call it Aurangabad. We'll call it Krishnabad. Krishnabad was making silk, the finest silk in the world. तो ये जो कृष्णबाद है, नया नाम है इसका। ये यहाँ पर पैठनी सिल्क जो बनता है, रेशम, ये बेचा जाता था वहाँ, व्यापार किया जाता था इसका। That's why they came to India, and by the way, we should stop using the name India and stop using the name Hindu. Hindu is not a Sanskrit word. It's a mispronunciation by the Muslims. Instead of saying Sindh, they said Hind, right? And in India is a name that British gave to any country that they conquered. So you have the West Indians, now you have the East Indians. Indian is a name of conquered people. तो भारत को हमें इंडिया नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब अंग्रेज आए और उन्होंने जगह जगह जाकर उन्होंने राज्य किया, तो सबको उन्होंने इंडिया के नाम से पुकारा। तो इंडिया का अर्थ निकलता है जिनके ऊपर राज्य किया जाता है। So if you use these names, you're letting the Muslims and the British control you. They're defining who you are. तो अगर आप इस शब्द का प्रयोग करोगे तो आप ये स्वीकार रहे हो कि जो मुगल हैं और जो अंग्रेज हैं वो आपके ऊपर राज करेंगे। The name of India is Bharat, named after Bharat, the son of Rishabhadev. तो वास्तव में इस देश का नाम है भारत, जो कि ऋषभदेव के पुत्र भरत महाराज पर पड़ा था। And the religion of this place is Sanatan Dharma. It's not Hindu. और इस क्षेत्र का जो धर्म है वो है सनातन धर्म, वो हिंदू धर्म नहीं है। So little by little you have to go back to the original culture of Bharat. तो धीरे-धीरे प्रयास करना है कि हम भारत का जो प्राचीन हमारी संस्कृति है उसे पुनः स्थापित करें। How do you do that? वो कैसे किया जाए? This is what Prabhupada wanted. प्रभुपाद जी यही चाहते थे। He didn't want us working in IT. He didn't want us working here and there. He wanted pure devotees, completely depending on the mercy of Krishna and preaching this Krishna consciousness to help the suffering people in this world go back to Godhead. तो श्री प्रभुपाद जी यही चाहते थे कि हम जो है मात्र कामकाज में पूरा मन ना लगाएं, जैसे कि आईटी में या कंप्यूटर के जितने भी व्यापार है उसमें,
वो चाहते थे कि शुद्ध भक्त बनते हुए हम भगवान श्री कृष्ण की जो महिमा है उसका प्रचार प्रसार करें ताकि जन समुदाय जो है इस बात को समझकर भगवत धाम जा सके। But to do this, you have to have faith that Krishna is the Supreme Personality Godhead. And if you depend completely on Him, not depend on the Tata factory or Amazon or science or any of that junk, you depend on Krishna, then you'll be able to do this. अगर हम ये करना चाहते हैं तो बहुत आवश्यक है कि हम पूरी तरह से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पर निर्भर हो जाएं, ना कि अन्य किसी चीजों पर जैसे कि फैक्ट्री है या कोई हमारी नौकरी है। उससे ज्यादा हमें भगवान श्री कृष्ण पर ही निर्भर होना सीखना है। So, if we had, just like Prabhupada, he went to the United States with no money and no place really to stay, because he had complete faith in his Guru Maharaj, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and Krishna. उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, पाश्चात्य देश गए, तो उनके पास न तो कोई धन था, न रहने के लिए कोई स्थान था, सिर्फ उनके पास जो वस्तु थी वो उनकी पूरी श्रद्धा अपने गुरु महाराज में और भगवान श्री कृष्ण की महिमा और करुणा में। You have to understand, he's 70 years old, 70, 71 years old. He's going to a foreign place. He doesn't really know anyone. He knew that one family, but he didn't stay with them very long. And he ended up in New York City, in the worst part of that city, because he had complete faith in Guru and Krishna. किसी को जानते नहीं थे वहाँ पर, लेकिन सिर्फ एक परिवार को थोड़ा बहुत जानते थे, उनके साथ वो पूरी ठीक से रह भी नहीं सके। वो न्यूयॉर्क में जाकर रहने लगे। न्यूयॉर्क जो शहर है उसके उस भाग में रह रहे थे जो कि बहुत खतरनाक और बहुत ही बेहुदा जगह था, क्योंकि उन्हें भगवान श्री कृष्ण पर पूरी श्रद्धा थी, इसलिए वो निश्चित थे। Now, I'm not saying that tomorrow you quit your job or anything like that. I'm saying we have to gradually work toward this, what's called minimalist living, based on complete faith in Radha and Krishna and Guru. कल से आप सबको नौकरी छोड़नी है ऐसा नहीं कह रहे हैं। आपको अपना जीवन जो है इतना सरल बनाने की जितनी आपकी आवश्यकता है उसके लिए ही आप थोड़ा सा काम करें, बाकी समय जो है पूरी श्रद्धा आप राधा और कृष्ण में लगाएं। This is what Prabhupada wanted, that we have ideal communities of pure devotees. श्री प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी बहुत हार्दिक इच्छा थी कि ऐसे भक्त और ऐसा भक्त समुदाय जो है स्थापित। So then let the people come and see. You're protecting Gomata, you're growing your own food, you have Paka first class ahimsa milk, your children are happy, husband and wife are happy and healthy. When they see this, they say, hey, maybe we should live like this also. तो अगर ऐसा समुदाय स्थापित होता है तो बाहर से जब लोग आकर देखेंगे कि कैसे हम गौ माता की सेवा कर रहे हैं, किस प्रकार से अपना अन्न खुद उगा रहे हैं, बच्चे संतुष्ट हैं, पति पत्नी आपस में संतुष्ट हैं, तो ये देखकर उनकी भी इच्छा होगी कि हमें भी ऐसे जीवन जीना है। So you have a great future. You can turn all of India, or not India, Bharat, back to what it was before. Living in self-sufficient villages, growing your own food. You don't have to import anything from China or America, all junk stuff anyway. And you're happy, and you're going to go back to Godhead in this lifetime. तो ये एक मंगल भविष्य है जहाँ पर आप पूरी तरह से आत्मनिर्भर जीवन जी रहे हो और आत्मनिर्भर भारत में जी रहे हो, और इस प्रकार से आप अपना मन जो है भगवान में लगाते हुए भगवत धाम जानने के अधिकारी बन जाते हैं। So we'll talk more about this. This is real Sanatan Dharma culture. And we want to bring it back, make India, make Bharat
the real place where Krishna's feet touched and Lord Ramachandra's feet touched, and so many great devotees, and even now, Vedas is here in Bhadariknath ashram. So we have to make people realize what is the actual glory of Bharat. तो आने वाले दिनों में इस पर और हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से प्राचीन भारत की जो सभ्यता और उसकी जो उसका जो उस महिमा थी वो हम पुनः स्थापित करें, उसे अपनाएं पूरी तरह से और फिर से एक उज्जवल भारत बनाने निर्माण करने में और एक संस्कृति निर्माण करने में हम हाथ दें. So I'll stop right there. If you have any questions, you can ask. अगर आपके मन में कोई शंका है, प्रश्न तो पूछ सकते हैं. आप अंग्रेजी में पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं, या हिंदी में पूछना चाहे तो हम अनुवाद कर देंगे. Thank you, Maharaj, for a wonderful lecture. Maharaj, how can we increase our determination? Because many times we hear lectures, and after a few times we just leave the high. The enthusiasm and that it goes away. So how we can be determined? Yeah. प्रश्न यह है कि किस प्रकार से दृढ़ निश्चय हो. हम प्रवचन सुनते हैं लेकिन कुछ समय के बाद फिर से मन जो है भटकने लगता है, तो दृढ़ निश्चय कैसे बना जाए? It goes away because you're having association with Vishayis through work, maybe in your family also, maybe your birth family. That's all bad association. मन भटकने का कारण है कुसंगति, या तो आपके परिवार में, या तो आपके समुदाय में, या जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ पर. Even in your workplace, you have to associate with non-devotees. अगर आप नौकरी कर रहे हो कहीं पर, तो वहाँ पर आपको लोगों से संपर्क करना पड़ता है जिनको रुचि है. So, how do we balance this? किस प्रकार से हम दोनों को संभाल के चलें? If you're spending, let's say, 10 hours a day working, does that make sense? 10 hours a day? Or more? Huh? 6 hours. 6 hours, okay. So you're working 6 hours, and you're sleeping, what, 6 hours, 7 hours? 7. Okay, so 6 and 7 is what, 13, right? Is that right? So now you still have 7 and 4, yeah, 11. You have 11 hours. What are you doing in that 11-hour period? Let me ask you, what are you doing in that 11-hour period? Or maybe you want to translate, Prabhu. तो महाराज जी ने उनसे पूछा कि आप कितना घंटे काम करते हो. महाराज जी ने पहले प्रस्ताव दिया 10 घंटे शायद, तो उनका नहीं, सिर्फ 6 घंटे. फिर कितना आप सोते हो? तो उन्होंने कहा, महाराज जी ने कहा 6. तो मैंने कहा नहीं 7. तो फिर महाराज ने जोड़ा कि 6 और 7 13 घंटे हो जाते हैं, बच्चे 11 घंटे. तो 11 घंटे में आप करते क्या? अभी उत्तर देंगे. Maharaj, the aspect takes 2 hours 30 minutes in chanting, and then in. How long does that take? 2.5 hours in chanting. 2.5 hours. 2.5, okay. So, so that's 13, so that's 15 and a half hours. 45 minutes in Kuti, and Well, I mean, you have almost 8 hours still. So what are you doing in that 8-hour period? Are you on the internet? No. Okay. Are you on the cell phone? No. What are you doing? What do you think you're doing? It is more
yeah, roam around with my friends and Roam around with your friends. Whoa. Okay. So now you have almost 8 hours. Let's say it's 7 hours, right? You have 7 hours of your day that you could use for seva and sadhusanga. And you can learn so many things. Right? So what's holding you back from doing that? Could say it, translate. तो 11 घंटे का फिर पूछा क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा कि 2.5 घंटे जो है जब करने में जाते हैं। तो महाराज जी ने कहा फिर भी आपके कम से कम 8.5 घंटे बच जाते हैं। उन्होंने कहा 45 मिनट खाना पकाने में जाता है, भोजन बनाने में। महाराज ने कहा मोटा मोटी 8 घंटे भी बचे हो, 7.5 घंटे। तो 7.5 घंटे में क्या करते हो? तो बहुत सोचने के बाद उन्होंने कहा कि अपने मित्रों के साथ हम यहाँ घूमते रहते हैं। तो महाराज ने कहा अरे बाप रे। उन्होंने कहा कि नहीं, 7 घंटे जो आपको मिल रहे हैं उसमें आप साधु संग कर सकते हो, उसमें आप सेवा कर सकते हो और प्रवचन सुन सकते हो। तो ऐसे महाराज सुझाव दे रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि So you have to balance the association with the Vishayis and association with genuine devotees, right? So you're doing 6 hours a day working, right? So at least 6 hours a day you should be doing service with the association of devotees. तो महाराज सुझाव दे रहे हैं कि अगर आप 6 घंटे काम कर रहे हो जहाँ पर आप विषयी लोगों से संपर्क होता है, तो आपको कम से कम 6 घंटे जो है सत्संग में सेवा में लगाना चाहिए ताकि वो बराबर हो जाए। Tell me who your friends are, I will tell you who you are. अगर आप हमें ये बताएंगे कि आपके मित्र कौन हैं, तो हम आपको बताएंगे कि आप कौन हैं। So Lord Chaitanya recommended 5 things. He said you should chant Hare Krishna. चैतन्य महाप्रभु 5 चीजों का सुझाव देते हैं। सबसे पहला हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। You should regularly hear Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. नियमित रूप से भगवद गीता श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। You should associate with devotees. भक्ति संगति करनी चाहिए। You should engage, you should live in a holy place. तीर्थ या बहुत ही शुद्ध स्थान में रहना चाहिए। So the temple is a holy place. मंदिर जो है तीर्थ स्थान है। And you should also engage in deity worship. और भगवान के विग्रह सेवा में आपको नियुक्त होना चाहिए। These 5 things you should do every day. ये 5 चीज हर दिन आपने करना चाहिए। If you do these 5 things every day, you will be able to have enthusiasm. अगर आप ये 5 चीज प्रतिदिन हर दिन करते हैं तो आपको बहुत उत्साह प्राप्त होगा। Utsaha, enthusiastic. Why? Because you're making intelligent decisions every minute of the day. जब ऐसे उत्साह आपको प्राप्त होगे तो आप जीवन में बहुत ही अच्छे निर्णय लेंगे, सुचारू निर्णय। You're choosing to be with Krishna 24 hours a day because whatever money you make, you donate to the temple. See, like let's say you need, I don't know, let's say you need 1,000 rupees a day to maintain yourself, but you're making 5,000 rupees a day. So that means you have 4,000 rupees that you don't really need. Therefore, you should use that in Krishna's service. तो 24 घंटे पूरी तरह से भगवान की मन लगाने का प्रयास करना चाहिए। आप अगर धन कमा रहे हैं तो जितनी आपकी आवश्यकता है वो आप अपने लिए प्रयोग करें, उससे अधिक धन जो है कृष्ण की सेवा में उसका प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपकी आवश्यकता है 1,000 रुपये और आप कमा रहे हो 5,000 रुपये, तो आपकी बचते हैं 4,000 रुपये। यह 4,000 रुपये जो है आप अलग अलग रूप से भगवान की सेवा में आप प्रयोग कर सकते हैं। Ishavaisham midam sarvam jatkinja jagatyam jagat tena tak tena bunjitaha ma agritaha kasasvidana. Krishna says, Ishavaisha, I am the owner of everything. That means he owns
your body, He owns your mind, He owns your senses, He owns your intelligence, He owns everything in the whole universe. Therefore, you should only use these things for Krishna's service. इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि ईशावास्य अर्थात हर चीज के स्वामी, हर अवस्था के स्वामी कृष्ण हैं। अर्थात आपके शरीर के स्वामी हैं, आपके मन के स्वामी हैं, आपकी इंद्रियों के स्वामी हैं, आपके बुद्धि के स्वामी हैं। हर प्रकार से भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। इसलिए आपको भगवान की सेवा में नित्य नियुक्त रहना चाहिए। So he also says that he's owner of everything, and he has set aside for every living entity, not just human beings, the ants, the birds, the dogs, every human being, he set aside their minimum quota for their subsistence. यहाँ पर भगवान ये भी समझाते हैं कि सर्व ब्रह्मांड के नायक होते हुए उन्होंने प्रत्येक जीव के लिए उसकी जितनी आवश्यकता है, उसका जितना कोटा है, वो निर्धारित कर दिया है और उसमें जीव संतुष्ट रह सकते हैं। So then he says, taking the minimum and using the rest in Krishna's service. Kurvan evaha karmani jijiva chek chatam samaha evam tvayi nanyate tusti na karma lipyate nare. You can live forever without any karmic reaction. अगले श्लोक में भगवान समझा रहे हैं कि अगर आप आपकी जितनी आवश्यकता है उसमें ही अपना जीवन व्यापन कर रहे हो, तो जो कुछ आप करते हो इस प्रकार से जितनी आवश्यकता उतने में जीवन अच्छे जड़ रहे हो, तो आप कर्म बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो। So, this is Shastra. We should believe it. You should try to do it. You're not married, right? Yeah. You are? Oh, okay. So, then your minimum need is more if you're married, especially if you have children also. No children. But it's more because you have to take care of your wife. But you have to decide what is the minimum. Now, if you're not married, minimum is way down here. If you're married, it's going to be up here. But that's all right, because you're going to make more money than you need. So therefore, you should use what's extra in the service of Krishna. आपकी आवश्यकता जो है हर एक व्यक्ति की अलग-अलग हो सकती है। जैसे कि अगर आप विवाहित हैं तो आपके परिवारजनों का भी आपको उनकी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना पड़ता है कि जितनी भी आपकी आवश्यकता या और लोगों के मिलाकर जितनी भी आवश्यकता है उसमें ही हम अपने जीवन यापन करें तो ये हमारे लिए बहुत लाभदायी होगा। But I'll tell you something. I mean, I've been married almost 50 years. I have 6 kids and 8 grandchildren. My whole life, I never worked for anyone. Once I began as a brahmachari, but then I got married and I started my own business. And I've never had a problem because I followed that rule. There's a minimum that you need to maintain the family. Anything above that, I've always used in Krishna's service. And because of that, the more I gave, the more Krishna gave me. महाराज जी अपना स्वयं का उदाहरण देख रहे हैं। पूर्व में वो ब्रह्मचारी थे, उस तत्पश्चात विवाह किया, विवाहित हुए। 50 वर्ष से अधिक विवाहित हैं वो। उनके 6 संतान हैं, 8 पौत्र हैं। जीवन में कभी भी उन्होंने किसी के लिए काम नहीं किया। उन्होंने स्वयं अपना व्यापार किया और इस नियम का पालन किया कि जितनी उनकी आवश्यकता है उसमें ही अपना जीवन जग रहे थे और उससे अधिक जो मिलता था वो कृष्ण की सेवा में नियुक्त करते थे, कृष्ण की सेवा में लगाते थे। जितना ज्यादा वो कृष्ण की सेवा में लगाते थे उतना ही कृष्ण उन्हें और देते थे। Krishna is real. He is the supreme personality of God. He owns everything. He's the richest person, the most beautiful person, the most powerful person, the most educated person, the most knowledgeable person, and the most renounced person. No one is equal to him or greater than him. So if you serve him nicely, you take care of Krishna, he takes care of you. कृष्ण एक परम सत्य है। कृष्ण से ज्यादा सत्य और कोई भी विषय नहीं है इस संसार में। कृष्ण ये परम सुंदर है, परम ज्ञानी है, कृष्ण परम शक्तिशाली है, कृष्ण परम रूप से बिल्कुल ही
अनासक्त हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो है परिपूर्ण है। अगर आप श्री कृष्ण की सेवा करोगे, भगवान श्री कृष्ण निश्चित रूप से आपका ध्यान रखेंगे। Now, to believe that, you need a lot of association with genuine devotees. इस सिद्धांत में अगर आपने श्रद्धा रखनी है, ये तभी संभव है अगर आप अच्छे भक्तों से, शुद्ध भक्तों से आप संगति करें। If you don't have faith, but you want to have faith, you have to associate with people who actually have faith and who actually follow the regulative principles, who actually chant 16 rounds every day, who actually get up every morning for Mangal Arati. Those are the type of people that you want to associate with. अगर आपकी श्रद्धा कम है या आपकी श्रद्धा नहीं है, तो आप उन लोगों के साथ रहकर अपनी श्रद्धा को बढ़ा सकते हो जो अत्यंत श्रद्धालु हैं। ये भक्त जो है नियमों का पालन करते हैं, भक्ति के जो नियमों का नियम है उसका पालन करते हैं, 16 माला का नियम पूर्वक जाप करते हैं, मंगल आरती इत्यादि में आकर वो सेवा करते हैं। Then you will become convinced and enthusiastic. Utsaha nishchayata. You'll have this confidence and you'll have this determination to strictly follow Krishna consciousness, and Krishna will protect you. तभी आप जो है पूरी तरह से विश्वस्त हो सकते हैं, आपको विश्वास हो जाएगा कि आप भगवान की सेवा करते हुए, कृष्ण भावना में रहते हुए आप संतुष्ट हो जाओगे। Yeah. If Krishna wants to protect you, no one can kill you. If Krishna wants to kill you, no one can protect you. अगर भगवान कृष्ण आपकी रक्षा करना चाहते हैं तो कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता, किंतु अगर भगवान के हाथ आपकी हानि होगी तो कोई आपको बचा नहीं सकता। So, the life of a devotee is based on complete dependence on Krishna. इसलिए भक्त का जीवन जो है वो पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण पर निर्भर रहता है। Look at Prahlad Maharaj, a 5-year-old kid. And his father is Hiranyakashipu, the big demon. And he's trying to kill his son, but he can't do it because Krishna is protecting him. जब प्रहलाद महाराज का उदाहरण देखिए, 5 वर्ष का बालक है, उसके पिता जो है भारी भरकम बड़े एक राक्षस हैं, दानव हैं। उन्होंने प्रहलाद को हानि पहुंचाने की बहुत प्रयास किए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि प्रहलाद को भगवान श्री कृष्ण जो है सुरक्षित रखे थे। This is not a story. This is fact. We have to understand this actually happened in history. There is Prahlad Maharaj, there is Dhruva Maharaj, there is Narada Muni. All these boys, they were young boys, only 5, 6, 7 years old, and they were protected by Krishna. ये वृत्तांत कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, ये सत्य है, ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जैसे कि ध्रुव, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, नारद मुनि, ये सब बालक 5-6 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया। And look how successful they became. और देखिए कितने यशस्वी भी हुए भौतिक दृष्टिकोण से। So, if you believe this, then little by little, you can't do this overnight, but little by little, your faith, your enthusiasm will increase, and you'll be able to do things that you thought were impossible. अगर आप इस सिद्धांत में श्रद्धा रखते हो तो धीरे-धीरे करके प्रयास करते हुए आपकी श्रद्धा अटूट हो जाएगी। So, I'm going to say one final word, that is, none of you really realize what your potential is. अंत में सिर्फ एक वाक्य कह रहे हैं महाराज कि आप में से कोई भी इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि आप में कितनी शक्ति है। I'll give you an idea. Brahma, Surya, Varuna, Indra, they're all jivas like us. उदाहरण के लिए ब्रह्मा, सूर्य, वरुण, इंद्र, ये सब जीव हैं हमारी तरह। They're like us. They're not, let's say, superhumans. They are ordinary jivas, but they've attained
this very high level of responsibility and power by being genuine devotees. ये हमारी तरह ही साधारण जीव ही हैं, किंतु ये अपने ऊंचे पद को अपने श्रद्धा और अपनी सेवा, भगवान के प्रति उनकी सेवा है, उसके आधार पर वो प्राप्त किए हैं। If you understand this, then you can realize that right now we have become highly limited due to modern education, which is all junk. But if we understand Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, it opens up a whole world of achievements that we can do. Just like Prabhupada, one man, by himself almost, has spread this Harinam Sankirtan all over the world. And Surya, he controls the sun. He's a jiva like you and me, but he controls the sun. How did he achieve that position? He's not 100% pure devotee. That's why he's still in the material world. But he's very close to going back to Godhead, if he does his duties correctly. How did he attain that position? It was by devotional service. तो हम अपने क्षमता को पूरी तरह से इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि जो आधुनिक विद्या अर्जन करने की प्रक्रिया है वो हमें सीमित कर देती है। वास्तव में उससे हमें बहुत लाभ, ज्यादा लाभ नहीं मिलता। सबसे अच्छा लाभ, पूर्ण लाभ तभी मिलेगा अगर हम शास्त्र ग्रहण करेंगे, जैसे भगवद गीता, श्रीमद् भागवत। उदाहरण के लिए देखिए, श्री प्रभुपाद जी अकेले व्यक्ति हैं जो कि बाहर जाकर उन्होंने इतना प्रचार करके इतना कुछ कर दिखाया। उसी प्रकार से जो सूर्य देव हैं, उनके पास कितनी शक्ति है कि सूर्य का जो ताप है, प्रकाश है, उसके ऊपर पूरा नियंत्रण है। कैसे उन्होंने ये शक्ति प्राप्त की? भगवान की भक्ति करते हुए। So I'll stop right there, but think about this tonight. We have been, as we say in English, dumbed down by modern education. We don't actually understand what we can achieve as a jiva. अंत में इस वाक्य के साथ समाप्त करना चाहते हैं महाराज की आधुनिक जो विद्या अर्जन करने की प्रक्रिया है, उसकी वजह से हम मूर्ख बन गए हैं, मूढ़ हो गए हैं, और इसलिए हमें इस पर विचार करना चाहिए। So I'll stop right there. As we say in America, early to bed, early to rise, makes a person healthy, happy and wise. जैसे कहा जाता है कि अगर आप जल्दी शीघ्र जो है सोते हैं और शीघ्र आप जल्दी उठते हैं, तो इससे आप स्वस्थ बनते हैं, बुद्धिमान बनते हैं और धनी बनते हैं। High achievers always go to sleep early, before 10 o'clock. जो जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, वो नित्य रूप से रात्रि 10 के पूर्व सो जाते हैं। And they wake up very early in the Brahma Muhurta. और फिर बहुत जल्दी प्रातः उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। That's the best time to make spiritual advancement. ब्रह्म मुहूर्त में सबसे ज्यादा आध्यात्मिक प्रगति होती है। So thank you very much. All glories to Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. हरे परम पूज्य हरे विलास No, महाराज। don't say it. Don't say it. Just say Srila Prabhupada ki jai. श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Bol. All glories to Prabhupada. महाराज जी ने कहा नहीं बोलना है, अगर आप चाहें तो बोल सकते हैं। Hare Krishna. Thank you so much, Guru Maharaj, for class and enlightening us. Hare Krishna, एक अनाउंसमेंट है। कल सुबह का प्रोग्राम इस तरह से रहेगा। सुबह 5 बजे यहाँ पर मंगल आरती होगा, तत्पश्चात जपा, और 7:45 यहाँ पर श्रीमद् भागवतम क्लास होगा श्रील गुरु महाराज जी द्वारा। तो सभी भक्तों से निवेदन है इस पूरे, और शाम को 6:30 बजे महाराज जी द्वारा प्रवचन भी होगा। तो सभी भक्त इन सभी महाराज के संग का लाभ लीजिए। जैसा कि महाराज ने अभी कहा कि हमने साधु संग
इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और हमारा डिटर्मिनेशन भी बढ़ता है। तो सभी भक्तों से निवेदन है हम महाराज के संग का भरपूर लाभ लें। हरे कृष्ण। Yes,